So, what is spiritual science? To understand law of karma is spiritual science. Law of cause and effect, that is spiritual science. तुझे ऐसा ही क्यों हुआ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों दिया है? कोई भगवान देता नहीं, तेरे कर्म आपको ऐसे बनाते. Oh God, save me. Your karmas have to save you. Oh God, look at me. Your karmas have to look at you. अरे बाबा, बात यही है स्पिरिचुअल साइंस में, आप कर्मातीत बने. पहला बात है, आज से कर्म करना छोड़ दीजिए. कैसे? यूं ही छोड़ देंगे क्या? कोई छोड़ने की बात है क्या? You have to get rid of your mind in your meditation. Mind is the doer of the karma, not the body. My hand is not lifting by itself. My mind is saying, hey, you lift your hand. Mind is the creator of this karma. अरे मन के सहारा ना होते हुए कर्म का संभव नहीं है. मन ही कर्म को करता है. So you can't control your mind to have right karmas. You have to rectify your mind. That happens through meditation.